how to find the imaginary point, जिसके the radius here, answer factors affecting the radius. Very good. Types of passage planning, appraisal planning, answer execution. Types of turn planning. Passage planning में पूरा हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ turn की बात कर रहे हैं. Passage planning तो पूरा हो गया, सिर्फ turn की बात कर रहे हैं. How to plan the turn. So what are the two conditions in which we have to plan the turn? So turning with constant radius and turning with constant. That is execution. With radar object and imaginary object. Yes, around a radar object or around imaginary point. These are the two conditions of planning. और दोनों में हम execution कर सकते हैं, which is constant radius and constant ROT. Are we good? Yes, sir. Yes, sir. We also did derivation of V by R. ROT is equal to V by R. A simple method to find out what is the ROT that I should have if I want to turn like this. Yes, sir. Simple method, V by R. Check the speed, check the radius in the chart. What is the radius of the turn? V by R is the ROT that I have to obtain. ROT हमने कैलकुलेट तो कर लिया, अब एग्जीक्यूशन जो हो रही है उसमें या तो कांस्टेंट रेडियस है या कांस्टेंट ROT है. तो दोनों मेथड में ROT जो है that will have to change if we are maintaining the radius, or if we are maintaining the ROT, then our radius will change depending on changing speed of the vessel. पकड़ में आ रहा है सारा? Yes, sir. Are you getting, Neeraj? Are you getting the grips on the topic? Yes, sir. No issues? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ कंफ्यूजन है, बात कर लो, अभी बताओ. Yes, नीरज. सर वही VRM और EBL वाला फिर से समझा दिया. मॉनिटरिंग अभी कर रहे हैं हम, अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं फिर से. All right, so we have done the planning, two conditions. We have done execution, two types. Whenever we are doing this execution, we also must monitor. There are methods of monitoring the turn. If I have a radar object, I can look at the radar, that object, and make our passage at a constant radius from this. So when we're changing, we have to maintain the radius from this object. चलो बोर्ड पे चलते हैं. All right, so I think board visible. All right. Board दिख रहा है सही से? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So when we are turning, we have a radar object. तो radar object से अगर हम constant execution जो होगा, हमारा किस तरीके का execution होगा? Either constant radius और constant ROT, ये दो मेथड है. When we are maintaining the radius, I have to keep the vessel on this track so that the radius is always remaining same. As we are turning, we have to maintain the radius. कैसे पता करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हैं? तो एक हमने देखा था कि by keeping the VRM at this place, VRM को हम रेडियस के बराबर रख देते हैं. जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे टर्न के पास, तो VRM इस पे टच करेगा या नहीं, क्योंकि रेडियस R है और उसी का VRM रखा है हमने. तो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द
rim of the VRM. Is that correct? Yes, sir. When we are here, then the VRM will be like this, again touching, because the distances are Yes, sir. again when we are reaching here, the VRM will be like this. Again, the distances are Yes, sir. so. By VRM, what we are doing, we have to keep the object always at the rim of the VRM as we are turning like this. If we are maintaining this object at the corner of this, at the perimeter of the VRM, then we are moving correctly on this. We are maintaining distance and we are proceeding on the right track. Of course, when we are doing constant ROT, तो of course क्या होगा, यहाँ पे जब हम बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा दूर होगा VRM, फिर नजदीक है. The object is here, initially it will be here, धीरे धीरे दूर जाएगा, फिर वापस आएगा नजदीक पे, क्योंकि we are going away, तो VRM थोड़ा दूर हो जाएगा यहाँ, फिर वापस जब यहाँ पहुंचेंगे तो फिर नजदीक आ जाएगा. तो VRM का point is okay, clear? Yes, sir. Okay. So first one was VRM. Using VRM, how we can monitor the turn. Number 2 is EBL. What are we doing in EBL? On an arc of a circle, the circle that we have made is around O, which is the center of this, and we are turning like this here. So our track is going to be this arc of the circle. Is that correct? Correct? Yes, sir. All right. Now when we are turning, since this is the tangent, so center point, will this be 90 degree or not? Yes, sir. If we are Yes, sir. turning here, if we are turning here, this is also tangent. So this will be 90 degree or not? Here also it is tangent. So when we are turning, this will be also 90 degree. So if we are at this place and the radar object is 90 degree to me, that is, it is a beam, then I am here. If we maintain it on the same bearing, same relative bearing with my ship's head, अगर मैं maintain करता हूं, that means I am on this. अगर खुदा न खास्ते मैं थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा हूं, tangent से बाहर निकल गया, तो क्या ये 90 डिग्री होगा? नहीं सर, बढ़ जाएगा. बढ़ No, जाए. sir. वेरी गुड. अगर हम यूं जा रहे हैं तो क्या ये 90 डिग्री होगा? अगर भीतर को घुसने लगे तो हमारी हेडिंग कुछ ऐसे हो जाएगी. सो व्हाट विल हैपन टू द बियरिंग? 90 से कम हो जाएगा सर. कम हो जाएगी. सर कम हो जाएगी. तो तो सर अगर मतलब ईबीएल कंडीशन में 90 डिग्री बियरिंग ईबीएल डाल के इसको हाँ, छोड़ देना है 90 डिग्री और पे वो EBL उस को पे डाल के छोड़ देना है और वो अपना इससे से पास होएगा. हेल्म ऐसे मेंटेन करना है ताकि ये रडार ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे रहे. अगर बाहर जा रहे हैं, ओके जैसा अभी सर. हमने बात किया कंडीशन, द वे वी टॉक जस्ट नाउ, दैट व्हेन वी आर टर्निंग, रडार ऑब्जेक्ट यहाँ है, हमने अपने ईबीएल को 90 डिग्री पे करके छोड़ दिया. मान लो हम यहाँ पे अभी ईबीएल को 90 डिग्री करके छोड़ दिया. जब यहाँ पहुंचेंगे तो 90 डिग्री ऐसे आएगा. हाँ सर. अब इसको हमें यहीं पे मेंटेन करना है. रडर हमने दे दिया था पहले, यहाँ से टर्न करना शुरू किया. जब तक हम मुड़ रहे हैं, इट हैज टू बी मेंटेन्ड लाइक दिस. खुदा न खास्ते अगर जहाज बाहर जाने लगा तो इसका बेयरिंग क्या हो जाएगा?
90 बढ़ से ज्यादा। जाएगा 90 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो 90 डिग्री हमने रखा था उससे पीछे पड़ जाएगा ये। यस यस सर। अगर हम भीतर को टर्न करने लगे तो जो 90 डिग्री रखा था वो क्या हो जाएगा, रडार ऑब्जेक्ट काम हो जाएगी सर। कम हो गया सर। लेकिन अगर हम सही चल रहे थे तो क्या होगा, 90 डिग्री रहेगा। सो इज इट क्लियर? यस That means if we are maintaining it at 90 degree, we should be moving on this track. अगर इस ट्रैक से बाहर होते हैं या भीतर होते हैं तो बेरिंग या तो कम हो जाएगा या बेरिंग बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कब, अगर बाहर जाने लगे। कम हो जाएगा कब, जब भीतर को जाने लगे, इस कंडीशन। अंडरस्टूड? सर, ये हम दोनों साथ में भी कर सकते हैं ना, VRM और EBL। एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। Other और thing is, एक्यूरेट होना। हाँ ठीक है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट में क्या, अगर आप ये मेंटेन करते हो, एक से भी कर लोगे तो चीज वही होगी, एक से भी करोगे तो वही होगा। यस सर। नंबर 3 इज विजुअल बेयरिंग। विजुअल बेयरिंग में चीज वही है, VRM आप नहीं यूज कर रहे, EBL नहीं यूज कर रहे, you are taking a visual bearing of the same thing, the object will remain same, it should be again 90 degree 90 degree 90 degree all the time। विजुअल बेयरिंग ले रहे हैं, रडार बेयरिंग नहीं ले रहे हैं। करेक्ट? कल किसी ने सजेस्ट किया था यस सर, फ्लोटिंग VRM। प्लॉटिंग VRM और ऑफसेट VRM। हमारा VRM जहाज यहाँ पे है, VRM को हमने यूं रखा है। हम इसका सेंटर उठा के यहाँ पे कर देंगे VRM का, जहाज यहीं रह जाएगी। हमारा जो VRM है वो ऐसा बन जाएगा, रेडियस के बराबर का VRM। सो VRM का सेंटर यहाँ हो गया। हमारे पास एक टर्निंग ट्रैक है, जस्ट जहाज को हमें इस ट्रैक पे रखना है, इससे इधर नहीं जाए, इससे इधर को नहीं जाए। We have to just keep it on the track. We have a marked passage जिसमें मेरे पास इंडिकेशन है कि मुझको जहाज कहाँ रखनी है। इधर को जाता है ROT बढ़ाइए, इधर को जाता है ROT कम कीजिए, सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। All these cases were there when you had the radar object, because you had something to see here. But what happens in case of imaginary point? You have the turn like this, but nothing to see here. So this was the case with radar object. Now, in case of imaginary point, what we should do? There is nothing to watch. मैं VRM रखूंगा तो मैच किससे करूंगा, EBL करूंगा तो मैं किससे करूंगा? So number 1 is frequent plotting of position, just by seeing कि अभी जहाज कहाँ है, बाहर जा रही है तो ROT बढ़ाइए, अगर भीतर जा रही है तो ROT कम कीजिए। So number 1 most mundane kind of method will be to keep on plotting the position and see whether we are on track or not. Simple as that. But this is primitive kind of method. Now we have smarter methods. In radar ARPA, there is GPS input also. So radar में आपको position भी दिखती है अपनी।
आरपा में एक फीचर होता है मैपिंग फीचर. That means on the radar we can place lines, circles, objects. So radar की screen पे we can place these lines and things. We can make our own maps on the radar screen. Remember that on the chart we have this imaginary point जिसका एक longitude होगा, एक latitude होगा. So using the mapping facility, what we do, we place an object here. कुछ boy डाल दिया, कुछ ऑब्जेक्ट डाल देंगे इस पोजीशन में. अब स्क्रीन पे हमें ये ऑब्जेक्ट दिखने लगती है. सामने कुछ नहीं है, पानी में कुछ नहीं है. In the water there is plain water, nothing is to be seen. But electronically, I have placed an object at this place. So on the screen it is visible. Now since we have the visible object, I can use VRM, I can use EBL. Visual bearing I cannot use because I cannot see there. I can use offset VRM. Understood? Yes, sir. So all the three methods, method 1, 2, and 4 can be used. In this case, additionally, we can have plotting of position to monitor the turn, to see whether the vessel is on the course, on the track, or it is going veering off to starboard or port side of the track. Any questions? Any questions? Hello? नहीं सर. Clear हो गया? हाँ सर. Okay. Take out your pen and paper, notebook. Are you ready with your pen and paper? Ready? Yes sir. Okay, write down. Reaction distance. Heading is reaction distance. Capital letter में reaction distance. नीचे, next line. Reaction distance, comma, also called advance. Also called advance, comma, is the distance traveled by the ship on the initial course from the point the helm was applied, from the point the helm was applied to the point
where the ship actually begins to swing or turn. सर एक बार सर the point From the point where the helm was applied to the point where ship actually begins to turn. Gautam, read what have you written. reaction distance, also called advance, is the distance traveled by the ship on the initial course from the point the helm was applied to the point. उसके बाद सर नहीं लिखा। To the point. To the point उसके बाद सर लिखा नहीं सर। Okay, to the point where the ship, to the point where the ship actually begins to turn. Where the ship actually begins to turn. Yes. Okay. Now what we are saying कि जब हमने स्टीयरिंग किया है जहाज में, हम जब रडर देते हैं तो इमीडिएटली जारो चेंज नहीं होता, जहाज नहीं घूमती, थोड़ा दूर चलता है, चलता जाता है, उसके बाद धीरे धीरे स्विंग शुरू होता है, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से घूमने लगता है। तो हम बात कर रहे हैं उस डिस्टेंस की जहां पे वो सीधा चलता ही जाता है, मुड़ता नहीं है। हमने रडर दे दिया यहाँ पे, लेकिन वो वैसे चलता जा रहा है, मोमेंटम के चलते जहाज सीधी जा रही है, अब धीरे धीरे जाकर के टर्न करना शुरू करता है। सो देयर इज सम बिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड ऑन द सेम कोर्स। अप्लाई कर दिया रडर हमने यहाँ पे हेल्म दे दिया, फिर भी जहाज सीधी चलती है और तब जाकर के मुड़ना शुरू करती है। सो सम डिस्टेंस स्ट्रेट going and then she begins to turn. That is what we are calling the reaction distance or advance. Next line. Denoted by letter F, capital F, denoted by letter F. Denoted by letter F, the reaction distance is the result of many factors, including maneuvering capability, including के बाद सर including maneuvering capabilities, maneuvering capabilities, M-A-N-E-U-V-R-I-N-G, maneuvering capabilities, and loading conditions, of the ship. It can be found in the maneuvering booklet. It may be found in the maneuvering booklet
maneuvering booklet of the ship, full stop, of the ship, full stop. If not available, it can be taken as क्या हुआ? नहीं सर, थोड़ा सा मिस हुआ था. Okay. It can be taken as, दूसरे लाइन में आइए, for medium ships dash 0.1 mile. Line 2, large ships dash 0.15 mile. 0.15 miles. For very large ships, dash 0.2 miles. सर मीडियम कितना हुआ लगभग? 1 cable, ओके 0.1 mile. Medium ship 1.1 mile. Large नहीं ship सर, शिप की मीडियम लेंथ शिप कितनी है सर? कितना लेंगे Okay. मीडियम में? कोई definition वैसे नहीं है, but generally it can be understood. Medium ships can be understood as 100 to 125 meters. Medium ships 125 to 200 meters. Maybe large ships over 200. Very large ships. This is a general सर idea. लोडेड एंड ब्लास्टिंग कंडीशन में भी बढ़ जाती होगी ना? पड़ जाती है, बट सेफली इतना हम लेकर के चल सकते हैं. लोडेड और ब्लास्ट कंडीशन इतना मान के हम चल सकते हैं. अगर अवेलेबल नहीं है, मनोवरिंग बुकलेट जो होती है उसमें हर लोडिंग कंडीशन में अलग अलग ड्राफ्ट के लेवल में बहुत सारे पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं जहाज के मनोवरिंग के बारे में, कि रिएक्शन डिस्टेंस कितना होगा, टर्निंग सर्किल क्या होगी, स्टॉपिंग एबिलिटी क्या होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, कितना एडवांस होगा, वगैरह वगैरह. ये बहुत सारी चीजें होती है उसमें. तो वहां पे ये वाली एडवांस भी होगी फॉर अलग अलग लोडिंग कंडीशन, अलग अलग डिफरेंट ड्राफ्ट्स. बट अगर नहीं है तो जनरल फिगर्स कैन बी टेकन एज व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. अंडरस्टूड? ओके. यस सर. यस सर. नेक्स्ट हेडिंग, व्हील ओवर लाइन एंड व्हील ओवर पॉइंट. से बार रिपीट कर दीजिए. व्हील ओवर लाइन. अच्छा पहले ये द रिएक्शन डिस्टेंस वाला पूरा पढ़ के बताओ. कृष्णा आप बताओ यहाँ से वहां तक. Sir, reaction distance also called advance, is the distance traveled by the ship or on the initial course from the point the helms was applied to the point where ship. One second. From the point where the helm was applied. From the point where the helms was applied to the point Applied. where ship actually began to turn, denoted by Begins to letter turn. begins to turn, denoted by letter F. The reaction distance is the result of many factors including maneuvering and capability and loading conditions of the ship. It may be found in the maneuvering booklet of the ship. If
not applicable, it can be taken as Not the available. sorry. Not available. If No, not available. if not available, it can be taken as from medium ship 0.1 From name mi- for medium ships. for medium ship 0.1 miles and light to large ship 0.15 miles and very large ship 0.2 miles. Yes. Okay. Second, दूसरा point लिखिए. Wheel over line and wheel over point. Everyone, please write down. Wheel over line and wheel over point. Write down. Wheel over line is a line. Wheel over line is a line parallel to the final course wheel over line is a line parallel to the final course, the distance of which Sir, parallel to the final course. Parallel to the final course, the distance of which WHICH, the distance of which from the final course is given by just 1 second. Sir, given the 1 second. Just repeating 1 second. I said, please wait. Okay, sir. Is given by T is equal to T, tango, T, capital T is equal to F sine theta, F sine theta plus R okay on screen. F sin theta पहले लिख दिया तो दूसरे में लिख दीजिए plus R into 1 minus cos theta. Write down everything on this up to this point. नहीं R के बाद सर into सामने है बोर्ड पे, स्क्रीन पे देखो. T is equal to F sin theta plus R into 1 minus cos theta. Okay. क्या लिखा पढ़िए शुरू से.
यस बोलो। नहीं समझ में आया, कुछ गड़बड़ Yes, है? sir. Please Wheel over read. line is a हाँ, line parallel to final course, the distance of which from the final course is given by t equal to f sin theta plus r1 minus cos theta, where t equal to perpendicular distance of wheel over point from new course, r equal to radius of turn, theta equal to angle of alteration of course, and f equal to depend on type and size of vessel. ओके ठीक है, रिएक्शन डिस्टेंस बेसिकली, एफ इज द रिएक्शन डिस्टेंस। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर सेइंग that if AB is the initial course, BC is the final course, then we have a line called wheel over line, which is having a parallel distance of t. Correct? The wheel over line is the green line, the distance of which from the final course is given by t. Is that okay? Understood? सर फिर से बताना एक बार। सामने बोर्ड पे देख रहे हो, ए बी क्या है इसमें, इनिशियल कोर्स, बी सी क्या है, फाइनल कोर्स, उस फाइनल कोर्स से एक डिस्टेंस हमने लिया है एरो के साथ, वो डिस्टेंस कितना बता रहा है इसमें, टी, टी। टी की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका टी का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टी की वैल्यू है एफ साइन थीटा प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा। यस, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज एफ साइन थीटा प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि थीटा इज द एंगल ऑफ ऑल्टरेशन, एफ इज द रिएक्शन डिस्टेंस, आर इज द रेडियस ऑफ टर्न। नेक्स्ट लाइन जो लिख रहे थे उसमें, नेक्स्ट लाइन, where the wheel over line, where the wheel over line intersects the initial course, where the wheel over line intersects the initial course is called wheel over point, is called wheel over point. Is called wheel over point. सर जो ये पैरेलल लाइन है, व्हील ओवर लाइन जो है सर, ये तभी बनेगी जब हमारे पास ये टी होगा ना सर, उसी के उससे टी हम कट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे ना, हमारे पास यस सर, थीटा की वैल्यू है या नहीं, यस सर, हमारे पास आर की वैल्यू है या नहीं, यस सर, हमारे पास टाइप ऑफ वेसल, साइज ऑफ वेसल होगा तो उससे हम एफ की वैल्यू होगी कि नहीं, यस सर, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टी का वैल्यू कितना होना चाहिए। यस सर। तो सर वहीं से एक स्ट्रेट लाइन वो पास करेगी अपने इनिशियल कोर्स से, और जिस पॉइंट पे कट करेगी वो व्हील ओवर पॉइंट है। Yes, so in this figure it is intersecting at this orange circle, is that correct, at A? यस सर। This is known as wheel over point. सर इससे होगा क्या? बात करेंगे, करेंगे अभी बात। ये समझ में आ गया, व्हील ओवर पॉइंट, व्हील ओवर लाइन क्या चीज है, अभी अभी बेसिक समझ में आया होगा, मतलब एकदम ऊपर ऊपर से, लेकिन जो लिखा वो समझ में आ रही है कि नहीं, कि एक लाइन खींची है हमने फाइनल कोर्स के पैरेलल इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, टी डिस्टेंस पे,
where this line is intersecting the initial course AB को जहां पे कट करता है उसको हम बोलते हैं wheel over point. Understood? Yes, sir. Continue writing. It is at this point, it is at this point that the wheel should be or helm should be applied it is at this point that the helm should be applied in order to obtain the desired turn. Completed? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Now we go to the board. Just 1 second. What we said that we have the initial course AB, we have the final course BC, we have the angle of alteration which is theta. We have made a plan for turning with the radius of R. This point being O, it is cutting at P and Q. So the vessel will come from here and then she will begin to turn. We have to keep the vessel on track. But as we know, if we apply the helm, the ship will not immediately turn. She will go forward and then begin to turn. That means if we want to have the desired turn coming from here, we have to apply the helm somewhere before. So how much of this before? 30. This is basically the distance F. अगर छोटी जहाज होगी तो तकरीबन एक केबल पीछे डालना होगा. अगर थोड़ी बड़ी जहाज होगी लार्ज शिप्स तो थोड़ा 1.5 केबल पीछे डालना होगा, पहले देना होगा. अगर बड़ा जहाज है तो 2 केबल पीछे देना होगा. तो हाउ डू वी फाइंड आउट कि कहां पे देना है इसमें? ऐसे तो हम मेजर करके डाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे. विल नो व्हाई. ऐसे तो हम यहां से 0.1 माइल, 0.15 माइल, 0.2 माइल पे डाल दे सकते हैं सीधा, बट दैट इज नॉट द राइट मेथड. We will see why it is not the right method. So what we do, we draw a parallel line from the final course. This is the final course. At a distance away, which is T, given by F sine theta plus R into 1 minus cos theta. At a distance away from here, we calculate this value and we draw a line like this, parallel to final course, another line which we are calling wheel over line.
where it is intersecting the initial course. Initial course को यहाँ पे कर रहा है. This is the wheel over point. This is where we have to apply the helm. Of course, this distance is f. So one thing is how it is coming about. ये f sin theta r minus cos theta कहाँ से आ गया? तो उसके लिए हम छोटा सा ड्रॉ करके इसी इमेज से निकालते हैं कि how this value of t is coming. From point P, we drop a perpendicular onto this QO. So this is now 90 degree. Correct? सही है या नहीं? हाँ सर. Let us say it is coming at M. This angle is theta. Because it is theta, the same angle is subtended at the center also. So do we have POM, a right angle triangle? हाँ सर. In which we have the hypotenuse as R, so tell me the value of OM. This is hypotenuse, this is R base. cos theta. R cos R cos. theta. All right, so this is R cos theta. Very good. Everybody okay? Anyone having trouble? No, sir. Okay, good. So then what is QM? R minus R cos theta. From here to here is how much? R sir. R minus R cos theta. Very good. R minus R cos theta. So we can write this as R को बाहर ले लें तो 1 minus cos theta. Is it okay? Yes sir. So if we extend this line further, from here to here, we have got R into 1 minus cos theta. Is that okay? From here to here. सेम ना, यहाँ से जो है लाइन वही वाली लाइन तो चली आ रही है. Yes, sir. और दोनों पैरेलल लाइन है. ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं? हाँ Yes, सर. sir. तो जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही डिस्टेंस यहाँ भी होगी. Yes सर. अब हम इसको आगे जो एक्सटेंड कर देते हैं इसी लाइन को, लाइन PM is extended and from on this we drop a perpendicular onto this point at a distance f. So since it is perpendicular, we have got another triangle. P हमारा ये है, ये हमारा point A है. Let us say this is R. So we have another triangle here, which is this. In this triangle, this one we know is F. Then what is RA here? RA. थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया. राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया. F sin theta. F sin theta. Okay. Since this is theta, okay, good, correct. This theta, then opposite angle also theta. Yes. Since these two lines are parallel,
That means this also opposite angle is also theta. And then opposite angle also theta. So this is theta. So in this triangle, we have got hypotenuse as f, and we want to find out the perpendicular P, which is RA. So hypotenuse और perpendicular के बीच में कौन सा फंक्शन आ रहा है? Sir, sine. Sine. Sin theta is equal to Perpendicular upon hypotenuse. RA by F. Correct? Yes, sir. That means this distance is F sin theta. So यहाँ से यहाँ तक R into 1 minus cos theta और यहाँ से यहाँ तक F sin theta. So total distance कितना हो गया? This plus this. हो गया या नहीं? Yes, sir. And that is what we say. At this distance away, we draw this line which is wheel over line, और जहां पे ये intersect करता है initial course को, that is known as wheel over point. So what we did, we have drawn the initial course and final course. हमने planning कर ली, turn की planning कर ली, wheel over point के लिए हमें t की value calculate करनी है. At a distance away from here, कहीं पे भी वो डिस्टेंस पे एक आर्क कट करते हैं और एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं ऐसा, जहां पे ये कट करता है, दिस इज व्हील ओवर पॉइंट. इट शुड बी पार्ट ऑफ पैसेज प्लान. Not only the courses have to be a straight line and as the arc of a circle, but also the wheel over point should be marked. How you are going to mark it? By calculating t. Initial course, final course जो डाला आपने, उससे डिस्टेंस एक कट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे t, लाइन खींच देंगे पैरेलल टू द फाइनल कोर्स, जहां पे ये इनिशियल कोर्स को कट कर रहा है. that is Wheel over line. this one is wheel over line. The line is wheel over line. The point at which it is cutting the initial course is wheel over Point. wheel over point. Why did we do this line thing? अगर आपकी जहाज यहाँ पे आ रही है एकदम ट्रैक पे, तब तो आपको पता है कि आप यहाँ पे रडर दे देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस f है, तो यहाँ से f डिस्टेंस पहले पे रडर दे देंगे. बट अगर आपका ट्रैक ये था और आपके पास ये व्हील ओवर लाइन नहीं है और आपकी जहाज थोड़ी सी पोर्ट स्टारबोर्ड हो चुकी है, आप इस ट्रैक पे नहीं आ रहे, थोड़ा ऑफसेट होके क्रॉस ट्रैक एरर हो गया है, अब कहां पे देंगे रडर? या आप पोर्ट ऑफ द ट्रैक चल रहे हैं, तो आप कहां देंगे रडर? अगर यहाँ पे आ रहे थे, तो आपके पास पता है कि आपको किस पॉइंट पे यहाँ पे दे देना है रडर. क्यों? यहाँ से F के डिस्टेंस पहले उसको रडर दे देना है. बट अगर क्रॉस ट्रैक एरर हो गई है, then where do you give the rudder in this cases? कुछ आइडिया? No idea. Now suppose in the same condition, if you had the wheel over line, अब आपको पता है कि कहां पे रडर देना है? अब आपको पता है कि कहां पे रडर देना है? Yes, sir. Where it is intersecting the wheel over line and initial course. So यहाँ पे थोड़ा लेट से देंगे, यहाँ पे थोड़ा पहले देंगे. कैसे पता चलेगा कितना? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आप ये इनिशियल कोर्स पे आ रहे हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करना है, दिस इज व्हील ओवर पॉइंट, दिस इज व्हील ओवर पॉइंट, दिस इज व्हील ओवर पॉइंट.
तो इसमें होगा क्या, आप टर्न करेंगे ऐसे और इसमें मिल जाएंगे, यहां से टर्न करेंगे इसमें मिल जाएंगे। सो अगर यहाँ पे ऑफ ट्रैक भी हो गए तो यहाँ पे जाके आप वही कोर्स कैच कर लेंगे वापस। All right, so in simple terms we have to have the definition of wheel over point, wheel over line, the reaction distance. We know the formula for wheel over point, कैसे निकालते हैं वो भी आपने समझ लिया। इसका बेनिफिट क्या है, तो क्रॉस ट्रैक एरर जो है वो नहीं होती। अगर जहाज जो है क्रॉस ट्रैक एरर अगर हो भी गया इनिशियल कोर्स पे, तो अगले कोर्स पे क्रॉस ट्रैक एरर को अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन ज्वाइन द फाइनल कोर्स परफेक्टली विदाउट एनी क्रॉस ट्रैक एरर। सर फिर रेडियस भी कम हो जाएगा ना? राजेश, सर रेडियस भी चेंज हो जाएगा ना उस हिसाब से? नहीं, रेडियस क्यों चेंज होगा, रेडियस क्यों चेंज होगा? रेडियस के लिए तो आपने किया हुआ है ना। क्या होगा, ये जो यहां से आ रही थी एफ, अब एफ यहां से टर्न शुरू होएगा और यहाँ पे मिल जाएगा। यहां से करेंगे तो एफ यहाँ पर शुरू होगा, टर्न यहाँ से शुरू हो जाएगा। सो रेडियस तो उतना ही रहेगा। रेडियस क्यों चेंज होगा? Supposing if you have the final course like this, if you have the wheel over line, if you are turning from here, यूं टर्न करते हैं, अगर आप यहाँ पे आते और यहाँ पे देते तो एफ डिस्टेंस के बाद रेडियस तो उतना ही रहती ना। तो दोनों तो एक ही चीज है ना। यस। So this is what is wheel over point and wheel over line. There will be few precautions that we talk about, few things that we talk about in the next class. What are the things to keep in mind when we are executing this turn? That will be happening. 10 मिनट का और क्लास बचता है इसमें, then we are done about a rate of turn. Please come with Okay, any sir, question. thank you. Come again. थैंक यू सर। Thank you, sir. तो देगा पहले ही थैंक यू बोल देता है, काम खत्म करने दो, बोलना खत्म तो करने दो। थैंक यू सर। चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो Thank you, बाय, sir. बाय, धन्यवाद सर। साइनिंग ऑफ।